2x your profitability. So if you're excited about it, write in the chat box 2x. Let us see how many of you are here for 2x. All right. तो मैं ये देख रहा हूं कि जी हमारे यहाँ कुछ चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, आप सब लोग दिग्गज लोग हैं, तो आप ये बताएं प्रॉफिटेबिलिटी होती क्या है? Hello, Mr. Atul. Yeah, Anuj. Welcome. Nice to hear you. Thank you. Yeah. प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी नहीं है जिसके लिए अपन धंधा कर रहे हैं, उसका पर्पज एक ही होता है, नफा कमाना। बिल्कुल। तो प्रॉफिटेबिलिटी है, आज अगर अपन कोई भी बिजनेस, इफ वी आर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ वेंचर और एनी काइंड ऑफ बिजनेस, देयर आर टू बेसिक पर्पस, दैट वन इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द अनदर इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। राइट। तो उसके साथ साथ ऐसे चार और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि आज खाली क्या प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का पर्पज है? इट्स आंसर इज नो। आज अगर मैं बना रहा तो मेरे को कस्टमर रिलेशनशिप इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वेंडर के साथ कैसी रिलेशनशिप है, दोज आर नॉन मॉनेटरी क्राइटेरिया। लेकिन अगर इफ यू कम टू द मेन पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी, यस, whatever we are earning, this is the another name for profitability. For that we are running, and we are doing the business. The ultimate purpose is the bottom line, which is profit after all the expenses. So this can be again, this can be from the many sources. This can be by increasing the sales, by increasing the gross profit, by reducing the expenses. These are the various methods, but the ultimate purpose of the business is profitability. Perfect. This is what I understand. Got it. Thank you. Thank you. So let's give a big round of applause. Anybody else? Haji. Hello. Hi, Shrikant. Hi, good morning. Good morning. Yeah, and really it was a great being with you, and fantastic morning with you. Thank you. And I just started my second inning. I mean after 11. So perfect. So what do you understand by profitability? Yeah, I think extracting juice from value addition. That's it. Okay, great. Extracting juice from value addition. Extracting juice. Right. Okay. Extracting juice from value addition. Perfect. That could be a profitability for any business. So value addition is important when you do any business. So we have to add a value to our product, and after that only you can extract anything, subtracting our expenses and all this overheads. You can get the profits. That is the profitability, and for that you'll have to use so many tools to perfect. Get, or you, isn't it? Yes. All right. Yeah, anybody else? Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Anybody else? Hello. Yeah. I'm Suprinder. This profitability is which is the bottom line, but there are a number of things that about the line which affect this bottom line. Okay. It includes the market, what you are aiming at. Then where do you stand in the competition with the other manufacturers of the same product? Right. Then the quality, the brand image is made by that. And thereafter, the reduction of the cost, which day by day change. You Absolutely. have to be all the time keeping eye on the various sources and how to reduce the inputs cost. Beautiful. So yeah. For this, you need proper people to manage those things. And yes. Where comes the HR? Yeah. Not only have the right people at the right place, you must be able to keep them with you
in order to get the business online also. 100%. So Kishorji, where are you from and what do you do? Quick half a minute. I am at Udaipur. I am with Rama Phosphates Limited, Okay. general manager of the unit at Udaipur, manufacturing fertilizer and chemicals. Wow. So Udaipur is the city of lakes and is also the city of rich people, right? Moneyed people. Yes, yes. All right. Okay, thank you for your inputs. Let's move on. Okay, thank you. Beautiful. So what we heard was about profitability, different understandings. Let's delve deeper into it. So the first and foremost, there is the 3C dynamics. हम जिस मार्केट में ऑपरेट करते हैं वहां पर हम हैं तो कंपनी है, बिजनेस है, हमारा कस्टमर है और हमारा कंपटीशन है, राइट? हम इस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में हमें पैसा बनाना है, हमें अपने बिजनेस को केवल सस्टेनेबल नहीं करना, हमें थ्राइव करना है। वो जिस तरह अभी श्रीकांत ने कहा कि जी वी हैव टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम वैल्यू एडिशन। हाउ कैन वी क्रिएट मोर वैल्यू? सीधे रास्ते से, हमें कोई तिगड़म लड़ाकर नहीं करना, हमें करना है सीधे रास्ते से, बाय एक्चुअली क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर द कस्टमर। A business is all about having customers, nurturing them and creating value for them and delivering that value to them. ठीक है जी? अब हम आते हैं पहले शब्द के ऊपर जो हम ज्यादातर लोग हम समझते हैं, व्हाट इज प्रॉफिट। जैसे अनुज ने कहा था नफा, तो नफा क्या होता है? नफा जो है वो है द मनी दैट यू मेक व्हेन यू सेल समथिंग मोर देन इट कॉस्ट्स। जो आपको उसको बनाने की या सर्विस डिलीवर करने की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा जब आप पाते हैं और उसका जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट कहा जाता है, नफा, राइट? नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू इज हमने जो पैसा अर्जित किया, राइट? कॉस्ट वो है जो हमने पैसा दिया या हमारे जो आउटफ्लो रहा। सो प्रॉफिट इन द सिंपलेस्ट टर्म्स इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। एंड प्रॉफिट ऑल्सो सेज समथिंग, प्रॉफिट के नाम में ही है प्रॉफिट, जो कि दर्शाता है कि हमारा बिजनेस फिट है, हमारे बिजनेस की हेल्थ अच्छी है। सो दैट इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, प्रॉफिट इज एट द कस्प ऑफ 3 थिंग्स, प्राइस, कॉस्ट एंड क्वालिटी। हम सब ऑप्टिमल चीज देकर अगर पैसा बनाएंगे तो वो सही मायने में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुताही बरत रहे हैं, हम कहीं ना कहीं वी आर कटिंग कॉर्नर्स। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट प्रॉफिट। ठीक है? Profitability is the extent to which a company earns profit month on month. Profitability जो है वो प्रॉफिट बनाने की आदत है, प्रॉफिट नहीं है। जिस कंपनी को प्रॉफिट बनाने की आदत है उस कंपनी को प्रॉफिटेबल कहा जाता है, प्रॉफिट एंड एबल, राइट? एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ती है? सेल्स बढ़ाने से बढ़ती है, मार्जिन बढ़ाने से बढ़ती है और कॉस्ट कम करने से बढ़ती है, सिंपलेस्ट टर्म्स में, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है? ये प्रॉफिट कमाने की क्षमता है जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। Factors that impact expenses are demand, productivity and competition. मार्केट में कितना माल उठाने की क्षमता है वो है डिमांड। एक्सपेंसेस है हमारा खर्चा कितना है,
प्रोडक्टिविटी है कि जी हम कितने एफिशिएंटली प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। किशोर जी ने कहा कि जी वो फर्टिलाइजर बनाते हैं प्लांट में, कितनी एफिशिएंसी से बनाते हैं, कितना यूरिया अंदर जाता है, कितना नाइट्रोजनस गैसेस वगैरह जो भी करते हैं, जो वो उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन क्या वो 1 रुपए का माल जो बेचते हैं उसको बनाने में केवल 60 पैसे खर्चते हैं? दैट इज प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स अगेन। और जो चौथा फैक्टर है वो है कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन क्या गुल खिला रहा है, वो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर डालता है। अगर कंपटीशन रेट उतारता है तो हमें भी रेट गिराना पड़ता है। रेट जब गिरता है तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट असर होता है, राइट। पहले प्रॉफिट खत्म होता है, उसके बाद में हमारा मूल खत्म होता है। Now, investors look at it to find out that if the company is a bankable asset. What that means is the investors, they look at profitability to find out whether they would like to invest in this company or not. तो अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आपको प्रॉफिट की तरफ तो ध्यान देना ही देना है, प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है। क्या आपके बिजनेस की क्षमता है हर महीने प्रॉफिट खड़ा करने की और पिछले महीने से ज्यादा प्रॉफिट बनाने की? अगर वो क्षमता है तो इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन सक्सेस और फेलियर। अगर आप कंसिस्टेंटली छोटा सा प्रॉफिट बना रहे हैं तो वैसा बिजनेस शायद लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा, राइट। Profitability is generally expressed in different ratios. It could be gross profit margin, net profit margin, operating margin, or EBITDA. I will not get into these details for two reasons. This is not my core area, but your chartered accountant will definitely know this. Yeah. Now coming to profit versus profitability. While profitability is a concept, profit is an absolute amount, which means it is the total amount of income or revenue earned above any cost or expenses. तो प्रॉफिट एक चीज है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लियर कट दिखाई देता है। प्रॉफिटेबिलिटी है जो हमें उसमें से निकालना पड़ता है। इट्स अ रेशियो, इट्स अ कॉन्सेप्ट। प्रॉफिटेबिलिटी एक तरीके की भावना है आपके बिजनेस की। डज दैट मेक सेंस? सो इफ यू गॉट दिस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, सो प्रॉफिट आपको क्लियर कट दिखाई देता है आपकी स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं देती। सो प्रॉफिटेबिलिटी में काफी कुछ छिपा रहता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स दैट इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे निर्धारित की जा सकती है? सबसे पहली चीज है एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे क्या हैं। अब खर्चों में आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तो हमारे पास समय कम है और दूसरा ये आज का टॉपिक नहीं है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इट्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, ऑफिस सप्लाईज, डायरेक्ट लेबर, रेंट एंड द लाइक्स, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं।
दूसरे आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम में नहीं आते. दीज आर लाइक इंटरेस्ट चार्जेस एटसेट्रा. So this is the cost of finance and the likes. And then is the capital expense or the capex, what they call. capex is आपने जो फैक्ट्री लगाई, मशीनें लगाई, उसका जो upfront जो पे किया, that is the capex which gets accounted for over a period of time. दूसरा फैक्टर जो है that is demand. डिमांड है मार्केट कितना माल उठा रही है आपका, और ये डिपेंड करता है सीजनैलिटी के ऊपर. किसी सीजन में, अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस टाइम पर राखी जो है वो बहुत बड़े नंबर में बिकती है, साल भर नहीं बिकती. सो देयर इज अ सीजनैलिटी टू दैट. लेकिन इस समय अगर आपको राखी बेचनी है तो आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपको बनानी शुरू करनी थी वो. इंटरेस्टिंग. और आपको जो है अपना नेटवर्क भी खड़ा करना था कि आप किस तरीके से मार्केट में राखी भेजेंगे. सेकंड इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस के वेरिएंस से इसकी डिमांड में कितना फर्क पड़ता है. आजकल टमाटर का युग है ना. टमाटर कहीं पर 200 और शायद किस जगहों पर 300 रुपए तक भी टच किया है. तो क्या इस रेट पर जाने के कारण आपने घर में टमाटर जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो कम हुआ है? अगर कम हुआ है तो उसका मतलब यह है कि प्राइस के ऊपर जाने से उसकी डिमांड कम होती है. लेकिन लेट अस से नमक आज से 20 साल पहले शायद 5 रुपए किलो रहा होगा, आज की डेट में 25 रुपए किलो है. लेकिन नमक फिर भी चाहे 5 गुना उसका प्राइस बढ़ गया, लेकिन घर में आज भी उतना ही नमक इस्तेमाल होता है जितना पहले था. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज लेस इलास्टिक. डिमांड उतनी ही रहेगी, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा. मेक सेंस. डिमांड इज ऑल्सो अबाउट स्केल. आप कितना बना सकते हैं. सो देयर वॉज अ टाइम जब बजाज का स्कूटर जो है वो एडवांस बुकिंग पर बिका करता था, क्योंकि उनके पास स्केल ही उतना था. उससे ज्यादा स्कूटर वो बना ही नहीं पाते थे हर रोज. आज भी अगर आप मारुति की कार लेते हैं तो उसमें वेटिंग पीरियड रहता है कुछ मॉडल्स का, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना. वो इसलिए क्योंकि वो उतनी ही गाड़ियां बना पाते हैं और मार्केट जो है वो ज्यादा गाड़ियां चाह रही है. एंड देन व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट्स. अगर टमाटर महंगा हो गया है तो मैं क्या करूंगा, शायद मैं टमाटो प्यूरी यूज करनी शुरू कर दूंगा. सो देयर इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट. और इस टाइम पर टमाटो प्यूरी मुझे सस्ती लगेगी, वेयर एज जब टमाटर का रेट जो है 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो हो जाएगा, तब मुझे टमाटो प्यूरी महंगी लगती है. राइट. सो दीज आर सम फैक्टर्स विच इंपैक्ट द डिमांड. देन इज प्रोडक्टिविटी. Productivity is related to scale of operations, how efficient your supply chain is, how much investment you have to keep in the warehousing or stocking and all that stuff. All that is also cost. Credit flow. आपको मार्केट में आपका पेमेंट साइकिल कितना बड़ा है. Is that cash in advance? Is that against cash, so cash on delivery? Or it is 1 week, it is 2 weeks, it is 60 days, 90 days? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है. जितना अगर आपके पास कैश इन एडवांस किस्म का बिजनेस है तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा मानी जाएगी. नेक्स्ट इज कंपटीशन. आपकी जो मार्केट है, हाउ अट्रैक्टिव इट इज फॉर कंपटीशन. व्हाट इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटीज व्हिच आर देयर. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इंपैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस. नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं.
the profit margin, return on assets, return on equity, return on investment, and then EBITDA, right? So these are some of the ratios which you can use to define the profitability of your business. Does that make sense? और यहाँ पर I would like to introduce two experts. One is CA Manish Kumar Sinha. He is somebody who coaches people on cross business boundary. He speaks to people on succession planning and the likes. So I don't think he's there. Manish, are you there? So you can always take down his number and reach out to him, and he can help you wherever you need. And the second expert that we have is Mr. Jagmohan Singh. He's India's leading cash flow expert. He is also an author of the book Financial Freedom by Financial Control. Okay. So yesterday, while I was preparing for this session, I spoke to both of them so that I could get some insights into what is profitability, how do you measure profitability, how do you find profitability. All right. And not only these, you can definitely go back to your own CA and get this information. All right. Now coming to what are the challenges related to profitability? Why is it that we don't know the profitability of our business? First piece, invariably, we don't have the monthly profit and loss statement of our business. So please write in the chat box if you have a monthly P&L statement. So write P&L, yes. And if you don't have, write P&L, no. And third, you can write NA, not applicable for me. So do you have a monthly profit and loss statement? Okay, Ajish, Sakshi. Let us have at least somebody. Okay, Anuj has. Very good. Kishorji, not applicable. All right. So as of now, only Anuj has. So, okay. So I'll just come to you, Anuj, in some time. All right. Second piece is once you have the profit and loss statement, do you analyze that on a month-on-month basis? Third, from that analysis, are you able to see that there is profit on a month-on-month basis or a year-on-year basis? That means last year, this month, because your business may have some kind of seasonality. So last year, this month, how was the profit? And this year, this month, how is the profit? Has it grown year on year or not? And the fourth killer is you may have the information, but you have not taken the action. So Anuj, can I please ask you to share? What do you do with this profit and loss statement, which you get every month? You'll need to unmute, I think. Not able to hear you. Am I audible now? Yes, you're audible now. Yeah. So as you have already mentioned in the webinar earlier that I'm a chartered accountant by profession, and I'm working for one manufacturing company. They manufacture the diamond jewelry. Wow. So I'm based in Mumbai, in Sheep's area, in the MIDC and the East. So for that company, you know, this is my core profession area, right? So all the kind of business finance or finance and account, this is my core area, right? So we have to analyze not only a monthly basis, even we derive the daily P&L to track our activity. Wow, that's really good. What we are doing and in which direction we are going. So not only monthly P&L, we have achieved the daily P&L from our software. That way we are going, and we have given some projection to the software, of course, that is needed. And on that basis, we do the analysis not only for the profit and loss. There are multiple factors in the factory also. Suppose the what we are producing is the cost per gram, or you know all the kind of expenses.
what budget we have decided, what are the KPIs, what are the benchmark, what are the variances. So all these, we decide and we discuss with the management also on the regular basis. And being a chartered accountant or being in the finance and accounts department, we sometimes feel we are the GPS for the management, right? Because we give the direction to them that in which direction you are going and in which direction you should go. So like a Google GPS, we perform like that. That this is your past performance, and you decided that you want to achieve the 1,000 crore or 2,000 crore, but where we are today, are we in line with that or not? So that's my core area. So of course, what you have mentioned, we are doing all these things, and this is must. And your webinar will help us a lot, and all the participant, and we all on behalf of all, I thanks to you. थैंक यू सो मुझे इस कन्वर्सेशन से दो चीजें मिली. Yes. ओके, पहली चीज, प्रॉफिटेबिलिटी इज द जीपीएस ऑफ योर बिजनेस. Yes. और आज की डेट में हमें अगर किसी जगह से कहीं पर भी जाना है तो हमें मैप तो चाहिए. चाहिए. हमारे पास वो पुराना दिमाग में जो मैप था वो काम नहीं कर रहा आजकल, डिफंक्ट हो गया. सो राइट इन द चैट बॉक्स, जीपीएस, प्रॉफिटेबिलिटी इज द जीपीएस ऑफ योर बिजनेस. राइट. दूसरी चीज जो मुझे मिली वो ये है, यूं ही नहीं बनता कोई जौहरी. राइट. आपका जीपीएस कितना प्रिसाइज है वो निर्धारित करेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है. और डायमंड बिजनेस में तो आप जो है 1 ग्राम का नुकसान भी नहीं, एक 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 शतांक मींस 1 ग्राम का भी, 1000 ग्राम का भी नुकसान सह नहीं सकते. सो अनुज जी, किस एसडीएफ में है बाय द वे? सॉरी, कम अगेन. आपने कहा सीप्स में है ना आप? यस. तो सीप्स में किस एसडीएफ में हो आप? एक्चुअली सिप्स के अंदर नहीं है, हमारा पूरा डीटी एरिया के अंदर है, तो जिसके अंदर एमआईडीसी एरिया है. वहां पे पूरा का पूरा एमआईडीसी के अंदर पूरा यही एरिया है. हाँ जी. जिसमें ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर आपको मेजर मिलेंगे. दिस इंडस्ट्रियल एरिया. मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सीप्स के अंदर था. ओके, तो सीप्स के अंदर मैं मेरा प्रीवियस या वी कैन स्पीक सेपरेटली. ऑलराइट. ओके, चलिए बाय. So please make it a point that profitability is the GPS of your business. All right. Thank you, Anuj ji, for giving this term. Amazing. So now, actions for profitability. How do you improve the profitability of your business? First is you manage your costs. You manage your costs by selecting appropriate suppliers, managing your premises in a more efficient manner, managing your finance cycles, managing your production. Second is review your offer to your customer. आप किस प्राइस पर बेच रहे हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं वो किस तरीके के हैं, क्या वो हर किच-किच करते हैं आपके साथ. And also look at what are the options to sell that you have. Means आप और बेचने के लिए क्या कर सकते हैं? Can you sell more to the same customer? Can you cross sell to the same customer? From that customer, do you get more referrals? So this is how you can increase your profitability. Third piece is efficient supply chain. Are you getting the best deals from your suppliers? Are you reducing the wastages, whether that is time or product or shipment, whatsoever? Then efficient sales efforts. उसमें retain high paying customers. Customer जो ज्यादा किच-किच करता है उस customer को drop कर दो. You will save a lot more energy and you will make a lot more money. Next is expand your market reach. आज अगर आप केवल अपनी स्टेट में हैं या सिटी में ऑपरेट करते हैं, व्हाट विल इट टेक फॉर यू टू एक्सपैंड टू द रीजन, टू द कंट्री? ऑलराइट. नेक्स्ट इज प्लग द गैप्स. गैप्स आर गुड एक्शंस पेंडिंग टू स्टार्ट. ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो आपके ध्यान में हैं लेकिन आपने उनके ऊपर काम नहीं किया है? यू नॉट डन टेकन एन एक्शन ऑन देम.
वन ऑफ द थिंग्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू इज कि जी क्या आपने अपने बिजनेस का बिजनेस मॉडल कैनवस तैयार किया है, और क्या वो तैयार करने के बाद आपने उसमें जो गैप्स दिखाई दिए हैं क्या आप उसको फिल कर रहे हैं? आर यू प्लगिंग दोज गैप्स? तो अगर आपने ये सेशन मिस किया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर 9 स्टेप्स टू योर बिजनेस मॉडल कैनवस के नाम से एक वीडियो होगा, आप प्लीज उसे देखें एंड create a business model canvas of your business. So plug the gaps. Gaps are good actions pending to start from your end. Write in the chat box gaps और इसको याद रखें। अगला वाला जो चीज है वो एक और बड़ी मस्त कलंदर किस्म की चीज है। आप में से कितने लोग हैं जो कि घर में ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं? लिखिए चैट बॉक्स में पेस्ट कंट्रोल, अगर आप पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। क्या अब ये पेस्ट कंट्रोल जो है ना वो जनरली किया जाता है कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, चूहों को भगाने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आप ये देखिए ऐसे पेस्ट्स जो हैं वो आपके बिजनेस में भी हैं। तो क्या आप अपने बिजनेस में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं? क्या आपने अपने बिजनेस में पेस्ट कंट्रोल किया है? क्या आप जानना चाहेंगे कि ये पेस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? आपके बिजनेस के लिए पेस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है? हेलो, क्या आप जानना चाहेंगे आपके बिजनेस में पेस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है? यस यस यस, चलिए आपने पूछा तो इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं जनरली बताता नहीं किसी को। ये देखिए, पेस्ट कंट्रोल इज पी इज प्रॉब्लम क्रिएटर्स। आपके धंधे में, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएटर्स कौन से हैं? हैव यू आइडेंटिफाइड देम? आपकी एनर्जी सकर्स कौन हैं? क्या चीजें हैं जो आपकी एनर्जी पी जाती हैं? आपको जो स्ट्रेस देते हैं वो स्ट्रेस गिवर्स। और आपके धंधे में, आपके बिजनेस में जो टाइम खा जाते हैं, कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जी वो एक तो पैसा लेट देते हैं और दूसरा बहुत ही फॉलो अप करवाते हैं कि जी सर दे दीजिए, मैं बंदा भेज रहा हूँ, चेक दे दीजिए, अच्छा चेक दे रहा हूँ, आप बंदा भेज, तो बंदा पहुंच गया, बंदा गायब, वहां से आपको चेक नहीं मिला। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम विच इज वेस्टेड। ऐसे कस्टमर को निकाल दो, यहां उसके साथ पॉइंट ब्लैंक बात कर लो कि अगर लेट आएगा तो मैं इतना % उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। हाउ डू यू एड्रेस दीज? So this is something which you will have to look at. What are the pests in your business? How do you control it? If you think this gaps and pests is something which is like really wow, so write in the chat box, wow, कुछ नया मिला।